Now, as an entrepreneur, manpower planning is very important. Why? Because there was a very famous saying, the people working in a firm make it what it is. Matlab, what the famous saying is trying to say is that if the people which are working in an enterprise or a firm or an organization, if they are of a quality people, if their skills, their knowledge is good, then what will happen? They will help the entrepreneur to make an enterprise a successful enterprise. So every organization becomes a good organization when number of people joins hands and work excellently. Everyone has to work as a team. Together they have to work, right? So if every person join hands, then whatever the goal the entrepreneur has set, that goal will be fulfilled. So actually the manpower planning in our subject entrepreneurship is basically related to human resource management, right? When an entrepreneur starts a business, he has to hire good people in the organization, because alone he cannot achieve all the goals, right? So human resource is a very important task which entrepreneurs should fulfill. If wrong people are recruited in the enterprise, what will happen? They will get wrong results, right? Entrepreneur will find wrong results. Imagine what will happen if lazy people or unskilled people are hired in organization. Instead of doing work, right? What are those lazy people going to do? They are going to keep the work pending. They will not do the work, and instead of work getting completed on time, what will happen? The work will keep on pending and the entrepreneur will face difficulties. So wrong people should not be recruited in the organization. An organization's performance and productivity. What is productivity in terms of mechanical engineering? Productivity means the output upon the input. In thermal, we call it as efficiency in thermal engineering. But in mechanical engineering or in terms of manufacturing or say production, productivity is nothing but input upon output. So whatever input I give, on basis of that I should get proper output. That is productivity. So performance and productivity are directly proportional to the quantity and quality of manpower. कितना अच्छा manpower आपके पास है, right? उसके basis पे आपको दिख रहा है ना, मिलेगी. हरा दिख रहा है ना. You will also get proper results, right? So manpower planning is very important. हमारे GTU के questions में GTU के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैन पावर प्लानिंग, और व्हाट इज मैन पावर प्लानिंग एंड हाउ इज इट हेल्पफुल टू द एंटरप्रेन्योर. नाउ सी, एंटरप्रेन्योर कैन नॉट जस्ट हायर एनी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? उसके लिए उसको प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा. ही विल हैव टू प्लान इट प्रॉपरली. So what does entrepreneur do? He always plans to get rich. Rich का मतलब पैसे वाला नहीं है. Rich का मतलब the one who is skilled person, the one who has qualification, the one who has knowledge. So entrepreneur plans for knowledgeable person in the enterprise, so his enterprise is going to flourish. Means whatever goals he has set for his enterprise, the entrepreneur will get those goals. He will be able to achieve those goals. This requires to build up loyal, efficient, dedicated personal staff work in enterprise. See guys, ऐसे ही quantity के लोग नहीं चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, क्वालिटी वाले लोग चाहिए. ऐसे ही कोई हायर कर लिया, then maybe your secrets will be out because you are a new entrepreneur, right?
मे बी आपके सीक्रेट्स बाहर जाएंगे, आपके बिजनेस को धक्का पहुंचेगा. सो इनिशियली यू हैव टू हायर लॉयल पीपल, efficient people, those who are very dedicated, right? Those who are not just greedy for money, but they are greedy for work. They will deliver quality work. ऐसे लोग हायर करने हैं एंटरप्रेन्योर को. इसीलिए यहाँ पे लिखा है मैन पावर एंड इट्स प्लानिंग. You have to hire good people in the organization. He has to be very careful. मैंने अभी बोला सीक्रेट्स बाहर जा सकते हैं, कुछ लोग धोखा दे सकते हैं. We don't want such people. So entrepreneur should be very careful in recruiting adequate and right human resource. Adequate because अगर मैंने कम लोग हायर किए तो बाकी के लोगों पे बर्डन आ जाएगा. अगर मैंने बहुत ज्यादा लोग हायर किए तो कुछ लोग बैठे रहेंगे, they will not finish their work. So I want adequate and right amount of human resource in my organization. See guys, this is very important principle, right? And you can say it is a definition. Manpower planning is a process. Step by step process करना पड़ता है where the entrepreneur hires right number of people, न ज्यादा न कम, right kind of people मतलब जिनमें skills होना चाहिए, knowledge होने चाहिए, at right place. See, there are several positions in the organization. Position for finance, position for engineer, positions for chartered accountant. So at right place the person should fit in. His qualification should be fit for a particular position. Right time to get work done from them against which they get economic support. उनकी सैलरी भी उतनी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो अच्छे से काम करे and they deliver good results to the. Moving ahead guys, manpower planning does helps to know what kind of people are required, how many people are required and how will they be selected. 3 questions पूछता है entrepreneur खुद से कि अगर मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहा हूं, एंटरप्राइज खोल रहा हूं, तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड एंड हाउ विल दे बी सिलेक्टेड. लेट अस सी ऑल द 3 पॉइंट्स इन डिटेल एंड यू हैव टू राइट डाउन द शॉर्ट नोट, सो you should write it in detail. What kind of people are required to run the enterprise effectively? Entrepreneur will hire person with qualifications, skills, knowledge, efficiency. Now see, I'll give you one example. Lot of recruitment advertisements are coming in the newspaper, right? People outside keep shouting, jobs nahi hai, bahar jobs nahi hai, we don't get job. Actually there are n number of jobs, but what happens is that for a particular job the recruiter does not find a person with good skills. The recruiter does not find out person having a knowledge. Today also if you will see simple वटवा की कोई GIDC वटवा में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्वालिटी इंजीनियर की जब रिक्रूटमेंट निकलती है तो व्हाट डू दे पीपल गिव अस द फीडबैक कि आपके वहां से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको वर्नियर कैलिपर भी पकड़ना नहीं आता है ठीक से, उनको लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वर्नियर कैलिपर का वो भी नहीं पता है, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी नहीं पता है. सो व्हाट द रिक्रूटर इज ट्राइंग टू से इज दैट ही इज लुकिंग फॉर अ पर्सन दैट इफ एट अ पर्टिकुलर पोस्ट, जैसे कि क्वालिटी इंजीनियर की पोस्ट पे उसको हम रिक्रूट कर रहे हैं तो उसमें स्किल्स भी तो होनी चाहिए, वैसी उसमें नॉलेज भी तो होना चाहिए. ही शुड बी एबल टू वर्क फॉर शिफ्ट्स, whether it is a day shift, night shift, he should be ready to work. So what kind of people are required? That entrepreneur should properly plan much before he starts the recruitment procedure, right? Next is that what kind of people are required, right? See, here he is talking about different positions. Managerial position पे कोई MBA किया होना चाहिए, सुपरवाइजर पोजीशन पे एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसमें स्किल्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे he should have administrative skills,
right? If he is an engineer, whether he is a mechanical engineer, then his mechanical concepts. If he is a civil engineer, then his civil concepts should be clear. Whether it is a technical post, non-technical post, या फिर skilled या unskilled class के workers को उसको hire करना है, तो whichever post he is looking for that person, accordingly that post, right, the person should be able to fulfill the skills. He should fix duties and responsibilities. See guys, most of the times what happens, people starts blame game. एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और डिजाइन डिपार्टमेंट के बाद ज्यादातर क्वारल्स होते रहते हैं, राइट? जब भी कुछ गलत होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बोलता है वी डिड आवर वर्क प्रॉपरली, डिजाइन डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड अस द design department did not submit us the proper drawings, and the दूसरी ओर the manufacturing department will say that we did our job properly, design department did not fulfill the proper work. Blame game start होता है. So entrepreneur or a manager should fix the duties and responsibilities, right? So this is very important task so that the quarrels do not happen. Next, what is that? Is that business activity to a large extent depends on what type of manpower you require. See guys, here what I'm trying to say is that आप जितना ज्यादा मैन पावर हायर करोगे, आपको उनकी सैलरीज फिक्स करनी पड़ेगी, उनका ग्रेड पे, उनका ग्रेड स्केल, उनको इंश्योरेंस देना है या नहीं, whether they'll be insured, whether they'll be non insured, उनका पीएफ अकाउंट खोलना है या नहीं खोलना है, right? आगे जाके their children will be given educational support or not. Everything is looked after in today's world, right? So while hiring the people, everything should be kept in mind. Moving ahead, how many people are required? See, unnecessary, you don't want to fill more number of people into the organization, neither less number of people into the organization. जितनी पोजीशंस है उतने ही लोग होने चाहिए. ड्रॉप आउट रेशियो नहीं होना चाहिए. ड्रॉप आउट रेशियो मतलब जब भी कोई ज्वाइन करता है उसके 10-15 दिन में ही अगर छोड़ के चला जाता है, मींस ही इज नॉट सैटिस्फाइड टू वर्क इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? The people should stay for a longer amount of time into your organization. They should be happy working in your organization, in your enterprise. So ये कैसे डिपेंड करता है? Amount of work to be done, right? The amount of work that an average person can do within a specified amount of time. उस पे ज्यादा बोझ डाल दिया तो वो कर ही नहीं पाएगा, right? So इस पे डिसाइड होता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल आई वांट इनटू माय ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज लेवल ऑफ एब्सेंटिज्म एक्सपेक्टेड. मैंने जैसे बोला, अगर जल्दी जल्दी लोग आपकी जॉब छोड़ के चले जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा लोग एब्सेंट रहते हैं, then also it is not good thing. They are trying to avoid the work. The present number of employees, this number should be high so that you will understand that okay, proper amount is being given to the work, a proper amount of work is being given to the people. And the last is future plans for expansion and diversification. अगर आप आगे जाके आपकी कंपनी को, आपकी इंडस्ट्री को एक्सपांड करने वाले हो, तो उस फ्यूचर प्लान भी होना चाहिए कि आगे जाके कितने लोग मुझे हायर करने, राइट? एंड वो हायरिंग परसेंटेज कितना होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन. So these were the questions on which manpower planning is done. Last topic in this manpower planning is how to recruit people, right? So recruitment के लिए पहले से ही entrepreneur को एक चीज ध्यान में रखनी है, that proper recruitment procedure he will follow. Then only right person at right job and at right time in his enterprise will be recruited. So एक proper method recruitment procedure की उसको बना लेनी चाहिए. उस पे जो भी पॉलिसीज उसने फिक्स कर रखी है उसको फॉलो करना है. उसको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हायरिंग के, वो नॉर्म्स उसको फॉलो करना है. जैसे कि सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजमेंट दे दिया,
राइट। एडवर्टीजमेंट देने के बाद सबके जो भी whatever their resume is coming, वो रिज्यूमे को प्रॉपर से छांट लिया, उसके बेसिस पे जिनको कॉल लेटर भेजना है उनको भेज दिया, राइट, उनको बुला दिया, एंड देन उनको सिलेक्शन की प्रोसीजर से गुजरना होगा, एंड विच एवर पीपल आर सिलेक्टेड उनको प्रॉपर 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग देनी है, सो दैट विच एवर पोस्ट दे आर बीइंग रिक्रूटेड दे विल जस्टिफाई दैट पोस्ट।